حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. मैंने एक शख्स को कुरान की एक आयत इस तरह पढ़ते सुना कि रसूल अल्लाह से मैंने इसके खिलाफ सुना था, इसलिए मैं उनका हाथ थामे आपकी खिदमत में ले गया। आपने मेरा एतराज सुनकर फरमाया कि तुम दोनों दुरुस्त पढ़ते हो। शोबा ने बयान किया कि मैं समझता हूं कि आपने ये भी फरमाया कि इख्तिलाफ न किया करो क्योंकि तुमसे पहले के लोग इख्तिलाफ ही की वजह से तबाह हो गए। Narrated Abdullah, I heard a man reciting a verse of the Holy Quran, but I had heard the Prophet reciting it differently. So, I caught hold of the man by the hand and took him to Allah's apostle who said, both of you are right. Shu'ba, the sub-narrator said, I think he said to them, don't differ, for the nations before you differed and perished because of their differences.